ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ। ਫਸਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸ ਇਨ BCC ਪੈਕਿੰਗ? 32%। ਆਊਟ ਆਫ benzylamine and aniline which is more basic? benzylamine. What is collodion? What are the monomers of nylon 6,6? Adipic acid and hexamethylene diamine. Artificial sweetener saccharin. Prove that R tetrahedral hole is equal to 0.225 into radius of sphere. डायग्राम बनाई हुई है, देखो जूम करके होर दिखानी है तुहानू। डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ R, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਾਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਾਲ r। At the last, thus for an atom to occupy a tetrahedral void, its radius must be 0.225 times the radius of the sphere. Next question. Give one example each for fitting reaction, then Allmann's reaction. Next reaction, how will you convert phenol into chlorobenzene and benzene? Next, I give the test for phenol. Litmus test turns blue litmus paper red. Bromine water test disappears the brown color of bromine. Next, I give two tests for acetic acid. Next, what are saponification and HVZ reaction? Give one example in each case.
Saponification is the hydrolysis of an ester under acidic or basic conditions to form an alcohol and the salt of a carboxylic acid. Example ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ. Then the ester on treating with the base sodium hydroxide converted back to alcohol and the sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification. Next है HVZ reaction. This is alpha bromination of carboxylic acid. It is also known as Hall-Wall-Hard-Zelenski. The short form of it is HVZ reaction. Very important बेटा, जरूर करियो चंगी तरह. Next, explain the acidic nature of acetic acid. In water it gives hydrogen ions, which shows its acidic character. Next, out of alcohols and monocarboxylic acids, which has higher boiling points and why? Next, give importance of carbohydrates. Next, define antibiotics. Give two examples. Defined as chemical substances which in low concentration either kill or inhibit the growth of microorganisms by intervening in their metabolic processes. Example है कि penicillin, streptomycin. Next है calculate the atomic mass of silver if it has FCC. Lattice and edge length है 4 angstrom and its density is 10.5 gram per cc. Density D ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. Z हैगा 4 FCC ਦੇ ਲਈ. Avogadro next हैगा Avogadro number है 6.022 in 1023. एज लेंथ 4 angstrom. इनू कन्वर्ट कर लेना बेटे सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कन्वर्ट होकर बन गया 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. एटॉमिक मास ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ सिल्वर ਦਾ. ये आ गया 107.12 ग्राम पर मोल. नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल फॉर स्कॉटन बोमन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, देन मेंडियस रिएक्शन. स्कॉटन बोमन रिएक्शन. नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. एग्जाम्पल जरूर देनी है हर एक दी. नेक्स्ट है मेंडियस रिएक्शन. एलिफेटिक एंड एराल्काइल प्राइमरी एमाइंस कैन बी easily prepared by the reduction of corresponding nitriles by nascent hydrogen in the press from sodium in ethanol. This is called Mendius reaction. The example है. नेक्स्ट हैगा अरेंज करना इन्होंने बेसिक नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਚਰੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ.
2 degree, then 1 degree, then 3 degree. Next, what are condensation and addition polymers? Give examples. Condensation polymers की ने polymer formed by the condensation of two or more than two monomers with the elimination of simple molecules like water, ammonia, etc. Nylon 6,6 and terylene. ते addition polymers की polymer formed by direct addition of repeated monomers with the elimination of by-product molecules, polyethylene, then Teflon. Next question है 17. What are SN1 reactions? यदि मैकेनिज्म दसनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दसनी है, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी दसनी है अल्काइल हैलाइड्स की. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्लो स्टैप है जोड़ा रेट रिटर्निंग रिएक्शन है. फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ फास्ट रिएक्शन है. दैन स्टीरियोकेमिस्ट्री दी रेसिमाइजेशन. नेक्स्ट है दी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन दी कितनी है उहदे ते डिपेंड करदी है उहदी रिएक्टिविटी. then की है टर्चरी अल्काइल हैलाइड, then सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, then प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, then मिथाइल हैलाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा व्हाट आर SN2 रिएक्शंस. ਉਹਦੀ भी इस तरह मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री ते रिएक्टिविटी दसनी है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ने है. दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रेट रिटर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ. मैकेनिज्म आ देख लो ਇਹਦੀ. Stereochemistry in SN2 reactions in case of optically active alkyl halide. यदि stereochemistry की है inversion of configuration. Then reactivity of alkyl halides towards SN2 reactions. Methyl halide, primary halide, secondary halide and then tertiary halide. बेटा याद करियो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चंस ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ.